Hey everyone, I welcome you all to this video. So we were discussing about different projects in our 13 Power BI portfolio projects with DAX and SQL course. कल हम लोगों ने सबसे पहले वाले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज ESPN क्रिकेट डेटा एनालिसिस, जिसमें डेटा सोर्स वेब था. बट इसकी हम लोगों ने कल रिपोर्ट नहीं देखी थी, तो आज इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज द काइंड ऑफ द रिपोर्ट दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट दैट. तो इसमें you will be able to create a 3-page Power BI report, जिसमें कि this is the first page that you can see, in which we have discussed about batting data analysis. Then on the second page we have bowling data analysis, and on the third page we have fielding data analysis. So you can the user basically will be provided with the flexibility to choose a particular player, and accordingly he can view different details about that given player, right, through these 3 report pages, depending upon the category: batting, bowling or fielding. अब ये देखने में जितनी सिंपल रिपोर्ट लग रही है, एक्चुअल में उतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि बेसिकली इसमें हमने एडवांस एडिटर वगैरह यूज करके मल्टीपल वेब पेजेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करके, डेटा क्लीन करके फिर रिपोर्टिंग की हुई है. सो वो सारी चीजें फर्स्ट प्रोजेक्ट में डिस्कस्ड है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड प्रोजेक्ट दैट वी हैड टू डिस्कस टुडे. सो सेकेंड प्रोजेक्ट इज बेसिकली नेम्ड पैनिक अटैक्स डेटा एनालिसिस. इसमें अगेन आप एक डिफरेंट डेटा सोर्स से कनेक्ट करने के बारे में सीखोगे, राइट? So the data source in this particular project is a snowflake. Or not only this, we have discussed about right from understanding the data, and then we have also discussed about basically what a panic attacks. So I've given you a brief of that as well in this particular project, and we have discussed about creating a free Snowflake trial account, then loading data into Snowflake, connecting Snowflake to Power BI, and how to use Snowflake SQL for understanding the data better and cleaning it. राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने पावर क्वेरी एडिटर में भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा क्लीनिंग डिस्कस किया हुआ है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, वी हैव क्रिएटेड डिफरेंट पेजेस. अभी रिपोर्ट देख लेंगे थोड़ी देर में, व्हाट इज द काइंड ऑफ द रिपोर्ट दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट DAX फंक्शंस लाइक इफ, स्विच, count rows, filter, divide, right? And then we have discussed about adding a separate page for age group analysis. So बेसिकली ये सारी चीजें हैं जो आप लोग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर सीखने वाले हैं, राइट? अगर हम लोग रिपोर्ट की बात करें, सो यू विल बी एबल टू क्रिएट दिस रिपोर्ट. ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट पेज. ऑन सेकंड पेज यू कैन सी दैट इसमें हमने सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं कि कैसे आप कैनवस में कैसे बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हो, और डिफरेंट विजुअल्स कैसे ऐड कर सकते हो, डिफरेंट विजुअल्स पे के थ्रू आप कैसे डिफरेंट इनसाइट्स को शो कर सकते हो. ठीक है, ऑल दैट पार्ट हैज बीन डिस्कस्ड. देन दिस इज द थर्ड पेज, जिसपे कि बाकी कुछ चीज़ें और रिप्रेजेंट की हुई हैं, कुछ स्लाइसर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, एंड उसके बाद यूज़र को कुछ इंसाइट शो किए हुए हैं, जैसे नंबर ऑफ पेशेंट्स बाय स्लीप आवर्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स बाय पैनिक अटैक ड्यूरेशन, नंबर ऑफ पेशेंट्स बाय ड्रिंक्स पर वीक. तो ये बेसिकली सिम्टम्स हैं, राइट? एंड इन सिम्टम्स के रिस्पेक्ट में ये सारे चार्ट्स को बनाया गया है. जब आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे तो यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल दिस पार्ट. एंड देन देयर इज दिस लास्ट पेज. इस लास्ट पेज में हमने स्मॉल मल्टीपल्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको यूज किया है, और इस पर्टिकुलर बार चार्ट को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है. ठीक है, क्लस्टर्ड बार चार्ट. सो दिस इज द काइंड ऑफ द रिपोर्ट दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट. और इस पूरे कोर्स के अंदर जैसे आपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में देखा कि हमने स्नोफ्लेक एज अ डेटा सोर्स यूज किया हुआ है, स्नोफ्लेक सीक्वल वगैरह डिस्कस किया हुआ है. तो ये सब चीज़ें इंटरव्यू के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. इफ़ यू कैन एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स वेल इन द इंटरव्यूज, इट्स सर्टनली गोइंग टू हेल्प यू टू क्रैक द इंटरव्यू, राइट? और इस पूरे कोर्स के अंदर ऐसे 10 से ज़्यादा डेटा सोर्सेज कवर्ड हैं, एंड हमने लास्ट में इनफैक्ट ये भी डिस्कस किया हुआ है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स को यूज़ करके कैसे आप अपने CV में इंक्लूड कर सकते हो. एंड ये एक मेजर क्वेश्चन होता है जो कि जनरली द पीपल हु हैव रिसेंटली ट्रांजिशन इनटू डेटा इंडस्ट्री, या दे वांट टू ट्रांजिशन इनटू डेटा इंडस्ट्री बाय बिकमिंग अ डेटा एनालिस्ट, दे आस्क दिस क्वेश्चन कि CV पे कौन से प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करें. तो ये एकदम परफेक्ट कोर्स है आपके लिए. एंड इस पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, यू कैन कंप्लीट ऑल ऑफ देम. देन इन द एंड वी हैव इंक्लूडेड अ वीडियो थ्रू विच यू विल गेट टू नो कि हाउ टू इंक्लूड दीज प्रोजेक्ट्स इन द CV, एंड कैसे ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दैट पार्ट. So I hope this session was helpful, and we will meet in the next session. Till then, thank you. Bye bye.